Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q3 earnings conference call of TIPS Industries. Today on this call, we have with us Mr. Kumar Tarani, Chairman and Managing Director, Mr. Girish Tarani, Executive Director, Mr. Sunil Chelani, CFO, and Mr. Avtar Singh Jeswani, Vice President, Accounts and Finance, and their investor relation partner, Orient Capital. This conference call may contain forward-looking statements about the company which are based on beliefs, opinions and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal the operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Kumar Tarani, Chairman and Managing Director of TIPS Industries Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you so much. Good afternoon, everyone, and welcome to the Q3 FY22 earnings call of TIPS Industries. I hope you and your families are safe and taking the due precaution during the pandemic. I'm happy to report a good quarter in terms of music releases and operational and financial performance of your company. This quarter, TIPS Industries has released 86 new songs, which is the highest number of songs released in any quarter so far in this financial year, which brings us to the total released songs for 9 months at 203 songs. We have released all songs for 2 big Punjabi films, namely Yes, I'm Student and Hausla Rakh. We have released 11 remaining songs of Project TIPS Rewind Season 1, tribute to Ghazal maestro Jagjit Singh under TIPS Original, which has received very good response in the Ghazal genre. We have also released 2 new songs, namely Bollywood Wala Dance and Meri Zindagi Mein under TIPS Originals, which have also got a great response. Our new Bhojpuri song Tumsa Koi Pyara by Pawan Singh and Priyanka Singh crossed 60 million YouTube views. Song was released on 10th December. As far as film division is concerned, the film division did not have any new releases this quarter. The viewership on various digital platforms is seeing steady growth with the internet penetration in the rural markets, and we are well placed to capitalize on that. Now let me hand over the call to Mr. Sunil Chelani, our CFO, to share the financial highlights of the quarter. Yeah, Mr. Chelani. Thank you, sir. Good afternoon, everyone, and warm welcome to our Q3 FY22 earnings call. Let me take you through the financial highlight now. Our revenue from operation for Q3 FY22 stood at rupees 44.2 crores as compared to 31.4 crore for Q3 FY21, a growth of 41%. For Q3 FY22, music revenue grew by 43% to rupees 44.9 crore compared to same period last year. For the 9 months ended 31st December 2021, total business revenue grew by 167% to 168.1 crore compared to the same period last year. EBIT exclusive of other income stood rupees 25.5 crore for Q3 FY22, a growth of 38% as compared to the same quarter last year, and EBIT margin was at 58% for the same quarter. EBIT from music segment stood at rupees 28.3 crore, an increase of 23% Y-to-Y, and EBIT margin was at 63%. Profit after tax stood at 19.9 crore for Q3 FY22 with a profit margin of 45%. PAT growth on Y-to-Y basis was at 61%.
With this, I open the floor for discussion. Thank you, gentlemen. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone wishing to ask a question may please press star and 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Akshay Sam from Sam Capital. Please go ahead. So, Tarani ji, firstly, congrats to your entire team for fantastic numbers. The first question was on growth. Sir, where did majority of the growth come from? Was this because of renegotiation of contracts with the existing platforms, or जो minimum guarantee के ऊपर हमें कुछ और revenue मिला? Can you explain where did majority of the growth come from? Because you guided for around 30% and we did much better than that. Mainly growth was from our new releases. हमने काफी new releases किए हैं. You know, this year already we have released 3 Punjabi films and 203 songs we have released by 9 months. तो majority उनमें भी growth है. And जैसे advertising के जो prices बढ़ रहे हैं from overall people, वहाँ से भी growth है. And all streaming platforms also doing well. तो उनसे भी कुछ overflows हैं, कुछ. It's a mixture of everything basically. Okay, so this growth is sustainable for the upcoming quarters. ये आप कह रहे हैं. मैंने जैसे हमेशा maintain किया है कि please expect कि हम 25-30% year on year basis करते जाएंगे. हमारी growth आएगी for next 3-4 years, 5 years. So that will, I'm quite sure, quite confident कि वो अभी भी I am stand on that. Okay. So also, what was the content cost in music this quarter? Content cost में से आपको अलग शायद नहीं बता पाएंगे, but उसमें जो total expenses है, तो वो आप उसमें देख सकते हो. Content cost ये बड़ा है. Other expenses है 16 करोड़, उसमें है ना? हाँ, उसमें है. तो उसमें content cost बड़ा है, absolutely. Last quarter से इस quarter में double हुआ है. And हमारे पास, जैसे मैंने आपको शायद last 1-2 quarter में मैंने बताया था कि we are also looking at acquiring a huge content की एक नया चाहिए library. हमने अगर after our IPO 2002-03 के बाद हमने content बंद नहीं किया था. We have concentrated on a quality content year on year basis, जो हमारे अपने films बनते थे या थोड़े बहुत जो भी हमने non film बनाए. But now we are very aggressive on that front. But then also with aggressive we are really keeping a check on quality कि हम थोड़ा better लें content. Price war में नहीं जाएंगे. अगर relatively छोटा artist भी मिलता है तो भी issue नहीं है. But we will be very careful about acquisition strategy. So we are very careful and we have our क्या बोलते हैं experience on that as well. So touch wood, everything is fine. Sir, last question before I join on the queue. Sir, और कोई negotiation चल रहा है with any other platforms from your side? आपने बोला you're still in discussion with a few. And also, what big releases can we look forward to in the next few quarters? That's all from me. As far as negotiations are concerned, वो तो हमारा business है. हम वो तो regular basis पे चलते रहते हैं. Whether he's selling my content or he's not selling my content, तो वो तो चलते ही रहते हैं. Because they need me, I need them. We both need each other. But maybe sometimes situations थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि हम available नहीं होते हैं उनपे. But discussion हमेशा on होते हैं. पर कभी भी कोई भी डील हो सकते हैं. मतलब उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं होगा ही नहीं. होगा ही होगा डील. आज ना होगा, इस क्वार्टर नहीं होगा, नेक्स्ट क्वार्टर होगा, नेक्स्ट नहीं होगा, उसके नेक्स्ट क्वार्टर होगा डील जरूर. And as far as content is concerned, we have already acquired a big film from Balaji Telefilms, a film called Karthik Aryan film. And film name is Freddy. Pritam का music है. Pritam is number 1 today in music composers में जितने भी इंडिया में हैं. So वो I'm quite confident कि we will have a very nice, good songs. 4 songs we will get, minimum commitment is there. तो वो बहुत अच्छा एक ट्रैक हमने लिया है. प्लस हमने साउथ में तेलुगु में एंट्री की है.
तेलुगु में हमने ऑलरेडी 2 बड़ी पिक्चरें एक्वायर करी हैं एंड कुछ 10-12 हमने छोटे छोटे पिक्चरें भी एक्वायर की है. तो वी आर लुकिंग एट दैट एज वेल. एंड पंजाबी में तो हम ऑलरेडी हैं ही हैं. पंजाबी में भी हमारे 4-5 पिक्चरें ऑलरेडी एक्वायर्ड है एंड स्टिल नेगोशिएशन. प्लस मैं ये जो आपको बता रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं और नहीं खरीदूंगा, मैं और भी नेगोशिएशन हमारे चालू है. एंड वी आर लुकिंग एट कि हम ऑल इंडिया हमारा प्रेजेंस होना चाहिए. जो 1-1.5 साल पहले हम कई मार्केट्स में नहीं थे, अभी हम ऑलरेडी 7-8 मार्केट में भोजपुरी, हरियाणवी, गुजराती, मराठी में री एंटर. पहले भी है हमारे पास कंटेंट, उनका रेपेटोर है हमारे पास, पर हमने उनमें सब में री एंट्री मारी है. आपने यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, लास्ट टिप्स तेलुगु, उसमें भी हमने एंट्री अच्छी तरह से मारी है. एंड देयर इज अनदर प्लान कि हम और 1-2 मार्केट में अगले 2-3 क्वार्टर में वहां भी हम आएंगे, जाएंगे. Thank you, sir. Thank you. I'll join back in the queue. Thank you. Thank you. The next question is on the line of Anika Mittal from NVest Research. Please go ahead. Hello. Hello. Is my line audible? Yeah. Hello, sir. It was wonderful to see the results, and obviously it is only increasing our confidence in your company. So I have few questions, sir. Number one, what is an update on this demerger, sir? I know that you updated that it should be done by Q1, but do you have any further details that you can share? See, as far as demerger is concerned, demerger हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, but you know कि there is a lot of agencies involved, exchanges, courts, NCLT, many follow-ups has to be done. हमारी बहुत अच्छी टीम है. They are really doing good job. I am expecting now it will be done in March, before March or maximum April. That is the deadline I have got from my experts who's handling this job. So let's see क्या होता है. Okay, sir, thanks. And second question is, when I see the earnings presentation, sir, I see some reduction in the viewership. So can you explain, like, are we seeing any, while revenues are obviously moving northwards, but I see a reduction in viewership. Is that anything that we can clarify? See, क्या ना, viewership का हो सकता है कि YouTube पे किसी का कोई सडनली किसी कोई ट्रैवल पे गए थे. You know कि लास्ट क्वार्टर में एक ये भी देखने को मिला था कि people went on touring. मतलब बहुत बड़ा पार्टीज होते हैं, ट्रैवल होता है. ये जो लास्ट क्वार्टर होता है थोड़ा हॉलीडे सीजन होता है. मे बी पीपल आर नॉट फोकसिंग मच ऑन यूट्यूब. बट एक बात बहुत अच्छी है यूट्यूब पे, व्यूज के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी व्यूज है उसमें पेड व्यूज कितने हैं. दैट इज द मेन थिंग. तो उसमें जो पेड व्यूज का जो नंबर है ना, मेरा बहुत ही बड़ा जंप है उसमें. तो प्लीज रेस्ट अश्योर्ड कि ये छोटा मोटा कभी कभी नीचे ऊपर होता रहता है. तो कभी आप देखोगे कि 15.1 है 15.3 से 15.1, तो सडनली यू विल सी कि यार 18 हो गया, 17 हो गया. तो वो फ्री का कुछ कम हुआ है. बट दैट्स क्या बोलते हैं, ऐसा बिजनेस है, अपना बिजनेस ही ऐसा है. बट नंबर वाइज पेड व्यूज में हमारे बहुत बड़ा इंक्रीज है. Okay, sir. And any specific strategy that you can let us know on your coverage on regional side, sir? If you can share with us some strategy. See, I can't give you all the details, but I can assure you one thing. And what I'm looking actually last, I think 3 quarters or 2 quarters back, I told you that we are not big time there in the new releases, and we have started last year onwards. We started new releases. We have to just see the trend. But my expectation is कि हम 2 साल में या 3 साल में पैसे हमारे सब वापस आ जाने चाहिए. और उसमें ये होगा कि हो सकता है एक आपका कोई पिक्चर फ्लॉप हो या आपका एक गाना फ्लॉप हो, and you have not recovered money on that song, but there is 2 super hit numbers, you have recovered extra monies on that what you have projected, but in totality you have recovered all the costs. So I maintain कि मुझे and whatever release till now, we have released Punjabi films, we have released 203 songs, and last year also we have released 200 songs. So what I see कि मेरे को 2.5 years तक मेरे पैसे पूरे जितने भी मेरे साल में लगाए हैं वो पूरे पैसे मुझे आ जाते हैं. So that's a good thing. I am happy about that. अगर वो 3 साल तक भी जाएगा तो I am happy. So that is and we should maintain that. अगर हमने वो maintain कर लिया ना तो that's really good for music label.
Thanks. Sir. One last question, if I can ask. I see a drop in margin while we are obviously reporting very extraordinary margins in the industry. Nobody has these margins. But any specific reason that you see there is a specific drop in the margin this quarter? Yeah. Percentage wise, you may be talking percentage wise. We have a drop. Because of the new content. And वो drop होगा ही होगा. आप क्या होता है अभी now we are entering into a new releases में हम जा रहे हैं और आगे चल के और ये बढ़ेगा. मतलब our investment will be big time investment we are going to do in new releases. But my target is that I should maintain even in bottom line year on year I should maintain 15-20%. But sometimes समझो एक साल में ऐसा नहीं हुआ तो आप my business ना what I feel कि हमारे कुछ और खर्चे है ही नहीं. हमारे खर्चे जो एक मैनेजमेंट कॉस्ट है बाकी सब हमारे कंटेंट पे ही कॉस्ट है और यू नो कि we write off entire content cost in the same quarter. So that can have an impact on the bottom line के परसेंटेज में. तो हो सकता है कभी परसेंटेज और भी डाउन हो जाए या कुछ हो जाए because of only that reason, nothing else. So I think you judge us on a top line basis I feel, and plus I feel कि you what I'm saying कि ये जो 25-30% what I can assume and I'm seeing ये रहेगा. ये advertising बढ़ रही है. YouTube is making more money, giving us more money. Streaming platforms also doing well. TV stations doing well. So touch wood everything is going well. So I don't see any problem. हाँ ठीक है छोटे मोटे नीचे ऊपर होते रहेंगे but because of content and I have to do that क्योंकि मुझे अगर अपना business को grow करना है और 10-15 years, so I need that content also. अभी हमें लगेगा, and we should invest that. Perfect, sir. Makes sense. Thanks for the opportunity, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Saket Mehrotra from Tusk Investments. Please go ahead. Thank you, Tarani ji. Thank you for a great set of numbers. फर्स्ट क्वेश्चन ये अभी आपने ये जो कहा कि आपका एक बहुत अच्छा जंप आया पेड व्यूज में ऑन यूट्यूब, तो डू प्लेटफॉर्म्स लेट्स से लाइक यूट्यूब और स्पॉटिफाई ये लोग क्या आपके साथ ये डेटा शेयर करते हैं कि कितना स्प्लिट है आपका पेड और एड्स में? या डेटा शेयर होता है, डेटा आता है एंड वी नो दैट. या यस. ओके, तो उसमें आप कह रहे हो कि पेड में यूट्यूब में यू सीन बहुत अच्छा ग्रोथ इन योर कैटलॉग यूसेज. यस. प्लस उनका जो मंथली जो पे आउट्स होता है, पे आउट्स में ही फर्क पड़ जाता है ना. हमें पता है कि लास्ट क्वार्टर में जो मैंने टोटल नंबर रिपोर्ट किया उसमें मुझे टोटल यूट्यूब से कितना पैसा आया और इस क्वार्टर में मुझे कितना पैसा आया. तो सीधा एक माना इट्स लाइक दूध का दूध पानी का पानी, सिंपल एकदम वेरी क्लियर. यूट्यूब में तो ऐसा है वी कैन मॉनिटर आवर इनकम एवरी डे. Right. And like stressing more on YouTube, right? So what I've seen is, whenever I open up trending songs in India, music में, एक तो आपका चैनल का लेट्स से ट्रैक्स दिखता है, बहुत सारी ये वाइट लेबल चैनल्स भी दिखते हैं आपके, जैसे फिल्मी गाने हो गए, 90s के गाने हो गए. सो इज दिस अ कॉन्शियस स्ट्रैटेजी दैट वी बीन डूइंग? जैसे आई अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज चैनल्स आर ओल्ड बट बहुत सारे नए चैनल्स भी मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने अभी तेलुगु का शायद चैनल चालू किया है. So is this something that we'll continue to do, or is this like a conscious way to keep recycling our old content? नहीं, मुझे लगा कि what our team marketing team felt कि हम जो हमारे पास जो मेजर म्यूजिक है 60-65% वो 90s का म्यूजिक है. अगर हम उसमें 90s का एक स्पेसिफिक चैनल खोल दें और वो हमें बहुत बूस्ट मिलेगा. एंड टच वुड दैट चैनल इज डूइंग सो वेल. माना 10 एक 6 महीने में मैं आज देखा था, 1-2 गाना मैंने चेक किया, माना ऐसा 50 मिलियन व्यूज है. माना 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में पीपल आर क्रेजी अबाउट दैट चैनल. सडनली वो बहुत अच्छा पिकअप हो गया चैनल. एंड एज फार एज यू सेड कि तेलुगु भी हम अगर तेलुगु मार्केट में एंटर कर रहे हैं एंड वी आर एक्वायरिंग मेनी तेलुगु कंटेंट, और तो उसके लिए हमें एक चैनल तो चाहिएगा ना डेडिकेटेड एब्सोल्युटली टू तेलुगु. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू ओपन दैट. तो हमने वो किया. उसमें लैंग्वेज का एक बैरियर होता है, अपना चैनल फोकस चैनल होना ही चाहिए उसमें. तो दैट्स करेक्ट. Great. Second question, Tarani ji, on this WMG partnership. So इस quarter while you've said आपके releases बड़े हैं and कुछ overflows है, let's say with these DSPs या OTT platforms. Yeah. So
has something to do in this explosive growth that you've seen with your partnership with WMG. Could that be one of the reasons? Or, is this contract up for renewal? Kaisa kya isme dynamics hai? If you can let us in on that. See, WMG, we did a deal with them in 2020 and September. And that deal is till 2024 March, 24 March, yes. 3.5 साल का डील है, तो अभी तो खाली मेरे ख्याल से 1.5 साल ही हुआ है और उसका जो भी पैसा है उसमें कुछ हमारे कंडीशंस हैं, but there is an MG, but there is some conditions कि we have to give them certain new releases, but and we are confident कि हमने जो उनको commit किया उनसे उनको हम लोग शायद 50% more ही देंगे, कम नहीं देंगे, maybe उससे भी ज़्यादा देंगे. तो वो और उनका जो हमारा जो अकाउंट होता है उनके तरफ से हमें 3 महीने में स्टेटमेंट आती है कि हमारा इतना बिजनेस हुआ और हम वो अकाउंट फॉर उस हिसाब से करते हैं. So there is a lot of money lying with us as an advance from them. So that every quarter they give us a statement and हम लोग उस हिसाब से नंबर अपना शो करते हैं बुक्स में. Great. And Tarani ji, what do you get a sense of with respect to, let's say, these incomes that you get from collection societies? I understand this quarter, वापस एक lockdown का wave था right at the peak of the going out season. So how do you see this evolving, and do you see any green shoots in that कि ये अभी it will stay like this? मेरे को लगता है कि अभी जो लोग हैं ना, they are really used to it कि अभी यार डबल मास्क या सिंगल मास्क पहन के करना ही है. कोई शादी स्टॉप नहीं हो रही है, कुछ नहीं स्टॉप हो रहा है. वो हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इधर उधर कुछ हो जाता है, but we are touched with by the grace of God, we are okay and we are doing really good. Even society is also giving me what I actually projected कि मेरा 30% होगा, but they are giving me more than that. So I am quite I am positive कि मेरे साथ तो सब ठीक है और मेरे को पैंडेमिक का इफेक्ट नहीं है. Great. Thank you so much. Thank you and all the best for the road ahead. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Kamal Verma from Morgan Stanley. Please go ahead. Yeah. Hi, sir. I just had a few questions. So I'm new to this company, but I just wanted to understand a few things. One is just in terms of your revenue split, how much is it coming from music streaming apps, how much from YouTube, how much from other sources? See, I can't share you that because that is a dicey, it's a competition, we are living in a competition world. So I can't really reveal that. But I can tell you that digital is always around 65-70%. Okay. Got it. Second thing, I just want to understand just in terms of your pace of acquisition. So, I mean, currently what I'm looking at is you're acquiring roughly from an annual run rate perspective, roughly 300 songs maybe in a year, right? Some of the peers might be even doing more, and we are generating, decent amount of cash flows to maybe pursue even more. Yeah. Just wanted to get an understanding from you, how much is this in terms of the total market available in India each year? How much percentage? And can we do more, or do we want to do more? Maybe we are just waiting for the right price, and only then we would want to buy out more songs. The reason I'm asking this question is, of course, currently our revenue growth has been pretty strong, and there are a lot of tailwinds to this industry. But over time, after 5-7 years, of course, how much you buy, the revenue growth will resemble very much how much you grow your song library, right? So that's why I just wanted to press upon this question in terms of how are you, in terms of how much aggression do you sort of want to have in terms of acquiring new songs, and how much are we acquiring in terms of the overall market available right now? See, we are aggressive in acquiring a quality content. And that's what we have experience also. We can also create music. We can also some movies, small movies we give them our own songs. गाने हम आपको देंगे and you just put it in your film. Give us the situation, we'll make you a song. We have a team of 6-7 good creative people. They can make a song and give it to them. So we have that various kind of models we work.
And I don't feel, and being a 35 years relationship we have in the industry and brand, so I don't have any problem regarding that. I can get any content I want, but there is a price issue can happen because of the competition. Everybody want a good content. थोड़ा उसमें that problem we will have, वो होगा, but then we have to manage, कुछ some भाई ठीक है, क्या होगा, हम जो टारगेट करते हैं 2 से 3 साल में रिकवरी होगी, 2 से 3 साल के जगह 4 साल हो जाएगी शायद एक टैग की, बट उस साल से इफ वी हैव टारगेटेड कि दिस ईयर इन केस वी वांट टू जस्ट एग्जांपल कि मेरे को 100 करोड़ का डालना है एक्विजिशन में, अगर मुझे 100 करोड़ डालना है तो 100 करोड़ में मुझे एक ही पिक्चर मिल रही है जो शायद 40 करोड़ की है या 50 करोड़ की है, तो मैं डालूं कि नहीं डालूं, कि मेरे प्रॉस क्या है, कौन क्या है, उसकी म्यूजिक कैसी होगी, कौन एक्टर है, कौन म्यूजिक है, मैं कितने साल में पैसे निकालूंगा। अगर मैंने वो पिक्चर ले ली तो बाकी जो मेरे 50 करोड़ है, क्या उसमें मुझे इतना पैसा मिलेगा कि वो थोड़ा सा मुझे उस 50 में भी कॉम्पनसेट करेंगे, और मेरी जो लॉ ऑफ एवरेज है 2-3 साल में जो मैंने ये 100 लगाया मेरे 100 वापस आ जाएंगे। तो दोज और कॉम्बिनेशन इफ यू डू नो तो आप निकल जाओगे, मतलब देन यू हैव टू सी a wholesale kind of a acquisition कि आप टोटलिटी में क्या कर रहे हैं। Got it. So roughly you are saying it takes 3 to 4 years maybe maximum for payback. नहीं, कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, कि अगर आपको प्रोड्यूसर ने कोई कंटेंट दे दिया, बहुत अच्छा कंटेंट निकला, तो शायद हो सकता है इतनी बड़ी एक्विजिशन प्राइस देने के बाद भी शायद 1 साल में निकल जाए। एंड वी हैव टू सी हाउ ये जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है कितनी और बढ़ रही है, कितनी और आगे फैलती है, कितने लोग सब्सक्राइबर एज ए सब्सक्राइबर दे आर ज्वाइनिंग, पूल कैसे अब आगे ग्रो होता है। तो ये तो अगर पूल ग्रो होगा तो एक्विजिशन प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे, वो तो होगा ही होगा। ओके, एंड दैट्स फेयर, एवरी कंपनी हैज देयर ओन कैलकुलेशंस। तो एंड दैट्स व्हाट वी हैव, हमारा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आई थिंक, जिन कंपनी के पास कैटलॉग्स है पुराने 30,000 सॉन्ग्स, 25,000 सॉन्ग्स, 1 लाख सॉन्ग, 2 लाख सॉन्ग, they are really in a very comfortable situation. Okay. And in terms of pricing over last, let's say, 5-6 quarters, what has been the trend? Again, as I said, I'm sort of new to this company, but in terms of pricing, how has it moved for your whole library of songs? Pricing of what? Pricing your contracts with streaming apps, or I mean, how has the pricing moved? Just for Mana, they are giving me money, that you are talking about. Right. Yeah, I'm growing. I told you we don't have to see an individual. हो सकता है कि कोई individual app is not doing well, but maybe some other app is doing very well. So overall, I'm seeing कि मुझे I should make 25-30% extra, which is very comfortable. I feel कि उतना we achieve that. Sure. Got it. Okay. Thank you, sir. Thank you. The next question is on the line of Ankit Babel from Shubham Ventures. Please go ahead. Yeah, sir. Good afternoon and congrats for a good set of numbers. There are a few questions. Sir, which all major platforms are still not our client? Which are not our client? 3-4 हैं उसमें, I can't, आप नाम ना पूछो, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ। 2-3 हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स कि जिसपे हम नहीं हैं, बट मुझे उसमें उनके वेरियस रीजंस भी हैं कि किसके साथ कोई इशू है, किसके साथ कोई इशू है, बट वो ये जो पार्ट ऑफ, अगर इट्स नॉट ओनली विद द टिप्स लेवल, इट्स विद ऑल द कंपनीज। किसी के पास कभी कोई छूट जाता है, फिर 1-2 महीने के बाद आ जाता है, फिर 3 महीने के बाद आ जाता है। तो दैट हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री में होता रहता है। सो नॉट टू वरी। एंड प्लस एज फार एज आप ये सोचिए, इफ यू आर अ म्यूजिक लिसनर, यू लाइक म्यूजिक, अगर जो प्लेटफॉर्म पे सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एंड मेरे ख्याल से जो ओवरऑल म्यूजिक बिजनेस के जितने भी पैसे हैं 40-45% तो यूट्यूब अकेला ही जनरेट करके दे देता है, या कभी 35% हो जाएगा, कभी 40% हो जाएगा, कभी 45% हो जाएगा। तो वो सबसे जो टॉप ऑफ द माइंड किसी भी कंज्यूमर के लिए म्यूजिक सुनना है तो यूट्यूब ही आता है। तो यूट्यूब तो आपके पास है ही है, तो आपका तो, और उसमें आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। कहीं अगर छोटी सी किसी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं हो, डिप आती है, तो अदर एप्स कॉम्पनसेट कर देती है उसका। तो एंड आई एम सीइंग दैट, आप भी देख रहे हैं कि हम क्या नंबर्स कर रहे हैं बिजनेस। तो मेरे ख्याल से
वो पॉइंट है, प्रॉब्लम माना वो एक थॉट है कि ऐसा सोच सकते हैं और वो भी होगा, माना ये नहीं कि वो परमानेंटली कोई दुश्मनी हो गई या ऐसा कुछ हो गया कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, एक सिचुएशनल फाइट है, 1 क्वार्टर में नहीं हुआ, 2 क्वार्टर में होगा, 4 क्वार्टर में होगा, लेकिन होगा, डील होगा। उनको भी चाहिए, मेरी जरूरत है, मेरे को भी उनकी जरूरत है। Okay. And sir, you also mentioned that the share of paid viewers increased in YouTube. So by paid views means on YouTube those viewers who have a paid subscription of YouTube, right? पेड सब्सक्रिप्शन प्लस एड चला, जहां पर अगर आपने एक वीडियो देखा वहां पर एड अगर आपने देखा, एड देखी और एड अभी उनके पास इतना एड के लिए ऑर्डर है कि दे विल प्लेस एड इन द सॉन्ग्स। तो अगर एड चला तो उसका रेवेन्यू मुझे मिलेगा, अगर एड नहीं चला तो वो मेरा फ्री में हो गया, देन आई एम नॉट गेटिंग एनी रेवेन्यू। Okay. And sir, just a question for my understanding. So you have a library of around 30,000 songs. So whenever you deal with a customer, all your 30,000 songs at one go is there on that platform? Not really, ऐसा भी नहीं है। एक हम 99% तो 30,000 पूरे ही आ जाते हैं, बट जैसे YouTube इज क्या कहते हैं उसको, इज और वीडियो ऐप मोर ऑफ उसके जो YouTube के जो ऑडियो ऐप हो, 2 ऐप हैं YouTube में, एक ऑडियो ऐप है, ऑडियो ऐप पे सब गाने अवेलेबल हो गए, ऑल 29,000 सॉन्ग्स। पर जो वीडियो ऐप है उसपे इतने नहीं होंगे, उसपे जितने हमारे वीडियोस होंगे उतने हमारे गाने होंगे, एंड वी आर कन्वर्टिंग ऑल दोस अदर सॉन्ग्स into a videos, proper videos or a lyrical videos, and we are every month we put many videos on YouTube. तो वो हमारा एक्सरसाइज all the time चालू ही रहता है। But sir, what I have witnessed is कि जो notifications आते हैं, because I am a subscriber of Tips Official, तो कोई बहुत पुराना गाना ऐड हो रहा है अभी, like so वैसा क्यों होता है? I mean वो तो आपका ऑलरेडी होना चाहिए ना, बट हम 1995 का कोई मूवी का गाना टिप्स ने भी ऐड किया है, say 5 days ago or 10 days ago. तो how come that happens? क्या हुआ था 3-4 साल पहले एक्चुअली YouTube का भी जो कैच ऑन हुआ है बिजनेस, वी हैव बिग टाइम जो हम बूम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आफ्टर जियो। और दूसरा क्या हुआ था, जो भी गिरीश माय सन हैज एक्चुअली जॉइंड मी इन बिजनेस एज अ CEO, ही इज अ CEO ऑफ द कंपनी। When he came into the business, he did all the old agreements. तो उन्होंने सब लास्ट दो साल पहले, इवन आज भी वो काम चालू ही है, ऑल द टाइम वी कीप ऑन ऑडिट आवर एग्रीमेंट्स कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। तो वी फाइंड कि हमारे पास तो बहुत सारे वीडियो राइट्स हैं विच वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग। तो फिर हमने उनके टेप्स ढूंढे, टेप्स हमारे पास पड़े थे गोडाउन में, टेप्स को ठीक किया प्रॉपरली, उसको आज के ज़माने के हिसाब से, आज के 4K ये हाई डेफिनेशन, ये वो HD क्वालिटी, ये दिस दैट, we are regularly doing that, and जो कंटेंट आज अभी भी हम डिस्कवर कर रहे हैं हमारे लाइब्रेरी से, we are updating. That's why आपको वो सब मिलता है कि ये अभी 6 महीने पहले पुराना गाना क्यों आया। तो वो we have done that exercise, big exercise, and still that is going on. So you feel that you actually have more than 29,000 songs का library? No, songs 29,000 है, बट जो वीडियोस है, वीडियोस में और एक मेरे को लगता है कि 1000 माना 500 और ऐड होंगे, मुझे ऐसा फील होता है। सॉन्ग्स है, ऑडियो इज अपडेटेड, ऑडियो इज ऑलरेडी देयर, ऑडियो इज ऑलरेडी देयर, ऑडियो आपको सब जगह सुनाई देगा। Okay, and sir, lastly, sir, though you have clarified, just reconfirmation that you mentioned that given the visibility you can grow at 30% for like 3, 4, 5 years, but at the same time you are focusing on aggressively buying some quality content also. Yeah. But sir, do you feel that that aggression can come at the cost of margins? I mean, or can we see that profit also should be growing at least at 30%? 30% will be difficult because हमारी जो सेम ईयर में हमको राइट ऑफ करना है, बट 15-20% तो मेरी बहुत ही वो है कि आई शुड मेंटेन दैट पैरामीटर्स एंड उसके अराउंड ही हमें काम करना चाहिए।
और हम तभी हम एक लॉन्ग टर्म वी हैव टू आल्सो थिंक कि लॉन्ग टर्म कैसे क्या होगा. So that way I feel that because अच्छा and majorly हमारा जो cost है, जैसे other companies, worldwide companies, they do write off in 4 years, 5 years, 6 years. अगर हमारी है aggressive policy, so that can really impact us to some extent. And I don't want to change that because मैं beginning से जब मैंने business चालू किया था, when I was माना 1-2 पिक्चर भी हम रिलीज करते थे, तो we taken this यार ये तो खर्चा हो गया ना, ये पैसा थोड़ी वापस आने वाला है. अगर चले नहीं चले कंटेंट आप उसको राइट ऑफ कर दो, नहीं तो हमको तो टैक्स पड़ेगी. 88-89 में जब हमने ये हम तब से फ्रॉम दैट टाइम वी आर डूइंग दिस पॉलिसी, वी आर एग्रेसिव एंड आई डोंट वांट टू चेंज दैट कि नहीं अभी हम पब्लिक है कंपनी तो टू इन्फ्लेट प्रॉफिट या व्हाटएवर. आई डू दैट. नो, आई डोंट लाइक टू डू दैट. आई वांट टू मेंटेन दिस वे. दिस इज द करेक्ट पोजीशन वी आर टेलिंग यू ऑल. तो ये हम जाएंगे तो बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं 30% तो 25-30% तो टॉप लाइन में और 15-20% बॉटम लाइन में मेंटेन करूंगा. आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. बट सर्टेन टाइम्स बिजनेस में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि सडनली मुझे कोई बड़ी पिक्चर मिल गई जिसको मुझे लगता है कि मेरा 2 साल में पैसा आ जाएगा, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ. और अगर मैंने उसको 25 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया दे दिया एक साथ, तो वो मेरे को और वो समझिए 1 मिनट के लिए मान लो कि फरवरी या मार्च में अगर वो रिलीज हो रही है, तो मैं अपनी वहां तो मेरे को सीधा 15-20 करोड़ का मुझे सीधा इम्पैक्ट आ जाएगा. तो यू इन्वेस्टर, आप जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, आपको थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा कि दिस इज द वे ऑफ बिजनेस. एंड अगर ये कंपनी अगर ये 15-20 करोड़ का ये इतना बड़ा कंटेंट राइट ऑफ ना करते तो उनके रिजल्ट क्या होते. तो यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड. तो हम लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा, इट विल बी अ साउंड थिंग. So on a normalized basis, you can meet your revenue growth targets in profit also. Some year it will come down, some year it may go up. नहीं, मैं आपको एक और नहीं, that's not a practice. Practice is कि 20, even I'm doing that. My thinking is कि मैं 15 से 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मेंटेन करूँ बॉटम लाइन में भी. ये कभी एक्सेप्शनल ईयर आएगा, ये नहीं होगा कि इस साल आया तो अगले साल फिर आया, फिर परसों वाले साल में आया. क्योंकि अगर मैंने इस साल अगर ऐसा कुछ किया तो उसका प्रॉफिट भी तो नेक्स्ट ईयर में आएगा ना. तो नेक्स्ट ईयर तो मेरा कवर हो गया. तो डोंट वरी कि ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगी. आई डोंट सी कि दिस विल बी ऑकेशनली. ठीक है, 5 साल में 1 साल शायद ऐसा हो गया कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ आपको, या आपने पर्पसली किया, एंड दैट्स अ कैलकुलेटेड स्टेप. Okay. Yeah, sir. That's it from my side. Thank you. Yeah. Thank you. We'll move on to the next question. That is from the line of Vipin Lamba from Lamba Investments. Please go ahead. Yeah, thanks for taking my question. Sir, is it possible to divide in our revenue? Generally, how much does it come from new content for a period, and how much is basically old library? Is it possible to divide it that way? Not in the report, but after 2-3 years we will start that practice, because अभी now actually we are starting acquiring new content. तो वो भी हम exercise करेंगे, वो हमारे mind में है. We will do that. But actually sorry, go on. Because as you write off the total thing in the same quarter, this will be a good idea. That will give a good sense of that how much is it coming from the old and how much is new. Then the way you're saying that we can, cost can be absorbed that way, and then revenue can also be compared from the new content. वो थोड़ा सा competition में भी problem है, because of we are in a competition world. You don't want to reveal all the numbers, but we'll see how things develop. देखते हैं, मना आगे. Let's wait for that for 2-3 quarters at least. We'll see that क्या होता है, कैसे होता है. Okay. And so, like in post-COVID world, it is being seen that maybe digital viewership growth may slow down a bit, as even Netflix in guidance or has come down internationally. Do you see it as an impact in our business also? On the contrary, मुझे तो लगता है कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑल द कार्स आर, आप कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जाएंगे तो आप म्यूजिक सुनोगे. यू विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ म्यूजिक, एंड प्लस पोस्ट कोविड पीपल विल गो क्रेजी. जब क्रेजी होंगे, दे विल ट्रैवल, दे विल ईट फूड, दे विल पार्टी, दे विल डांस, दे विल डू शोज. सब लोग आउटिंग करेंगे बहुत सारा.
so you will make a lot of money on that front as well. माना मैं आपको अभी I can't actually share few numbers, but ऐसे कुछ numbers हैं कि you will be amazed कि मैं तो सोचता हूँ कि 3-4 साल में जो मैं सोचता हूँ कि 25-30% जो मैं बोलता हूँ कि मेंटेन होगा, बट इसमें अगले 5 साल में एक साल ऐसा भी आएगा कि जहाँ पर आपकी ग्रोथ एक्चुअल मेरे ख्याल से ये साल ही ऐसा दिख रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि 40-50% भी आप निकल जाओ, एंड देन 40-50% से फिर 25-30% फिर मेंटेन होगा. I see कि that year will also come in next 2-3-4 years. So I don't see कि वो कोविड का हमें कुछ फर्क पड़ेगा. ऑन द कंट्री कोविड जाएगा तो और हमारे को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. Okay. And one last question, sir. In your movie business, what is the long-term plan in terms of what is the kind of revenue we target to get on a yearly basis? Because just to get just a sense on that, I know some kind of plan in that. Movie business में at present actually we are focusing big time on a music business. Movie business में yes there is a focus, there is some वहाँ पर भी कुछ thoughts हैं, but let this demerger happen, then we will do something on that as well, and we will tell you in next not next quarter, next to next quarter we will present key what is our plan for music for film business as well. And सर म्यूजिक बिजनेस में जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मूवी जाती है तो हमारा रेवेन्यू एक टाइम में आ जाता है या उसमें भी कुछ रिकरिंग नेचर होता है? वंस द लाइब्रेरी बिकम बिग फॉर मूवी आल्सो, उसमें भी रिकरिंग रेवेन्यूज होते हैं? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे एक बात और याद आई, व्हाट यू सेड क्वेश्चन बिफोर दैट कि नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू नीचे आ रहे हैं. सी नेटफ्लिक्स एंड ऑल दीज जो एप्स है ना, ये सब वीडियो एप्स हैं. हम जो है ना ऑडियो ना आप काम करते करते अपना खाना बना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम चालू है, आप म्यूजिक सुन सकते हो. आप ड्राइव कर रहे हो कार, आपके थॉट माइंड में कुछ और थॉट है, लेकिन आपने म्यूजिक चालू किया हुआ है, मे बी आपका ध्यान नहीं है, बट बैक ऑफ योर माइंड इट्स सूदनिंग यू, आपको स्मूथ कर रहा है, आपको माइंड को टेंशन फ्री कर रहा है म्यूजिक. तो म्यूजिक तो कोई कंपटीशन कर नहीं सकता. दिस ऑलवेज हैपेंस. जब वीडियो हमारे लाइफ में आए, जब वीडियो VHS आते थे, तब भी लोग ये सोचते थे कि अभी ऑडियो को तकलीफ होगी. देन CD और DVDs came, then also this happened, now also this is happening. But you see म्यूजिक कंपनियां सब ग्रोथ कर रही है वर्ल्ड वाइड. आई एम नॉट सेइंग ओनली मी, यू जस्ट सी वर्ल्ड वाइड इज ग्रोथ इज हैपनिंग, एंड वीडियो वाले थोड़े पीछे आ रहे हैं. उसके लिए आपको 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, बैठ के देखना है, तो उसके लिए फोकस चाहिए. म्यूजिक तो जनरली भी आप सुन सकते हो. हाँ, कम बैक टू व्हाट यू सेड, व्हाट क्वेश्चन यू सेड. सर लाइक मूवी की केस में भी जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में योर मूवी गोज, तो उसमें भी कोई रिकरिंग रेवेन्यू भी होता है या वन टाइम ही होता है उसमें? व्हाटएवर इट इज, it's one time. No revenue share deal happening in the industry. Only one time पैसे जो भी आपने ले लिए, and for some years में थोड़ा negotiation हो सकता है कि कितने years के लिए आप राइट्स दे सकते हो, बाकी one time ही डील होती है, one time money. Thank you, sir. Thanks for an excellent result. Thank you so much. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Ankush Agarwal from Surge Capital. Please go ahead. Yeah, hi Tarani ji. Thank you for taking my question. So, firstly, अपन जो अभी नया कंटेंट एक्वायर कर रहे हैं, इनमें ना डील फिक्स्ड है कि रॉयल्टी बेस्ड है? बिकॉज द एंटायर पास्ट लाइब्रेरी दैट वी हैव दैट इज मोस्टली लमसम पेड डील, राइट? सो ये जो नई डील अपन कंटेंट एक्वायर कर रहे हैं, किस काइंड की डील है? हमारे पास वो रॉयल्टी शेयरिंग ऑफ रॉयल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, and we all from beginning we have bought all the music on lump sum basis. एक ही बार जो भी पैसा देना है दे दिया, and even going forward same model we are continuing. No liability, nothing. अच्छा, one time lump sum, no pay, no minimum guarantee and no royalty. No royalty, only just no minimum guarantee, no royalty, all one time. जो भी पैसा देना है आपका हमने दे दिया, आपने हमको कंटेंट दे दिया, then whatever happens to that content, it's our problem. Right. So sir, ये स्ट्रैटेजी में आपको ऐसा लगता नहीं अपने को कंटेंट एक्वायर करने में इश्यू होगा अगर इंडस्ट्री जैसे आपका जो पीयर है, लिस्टेड बड़ा पीयर, वो लार्जली रॉयल्टी बेस्ड डील्स कर रहे हैं? तो इफ समझ लो कोई मूवी
प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल ऑन अ रॉयल्टी बेसिस एंड आप अगर सिर्फ लमसम में काम कर रहे थे तो उस केसेस में आपको लगता नहीं आपको डिफिकल्टी होगी कंटेंट एक्वायर करने में? नहीं, मुझे नहीं लगता है मुझे डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हर कंपनी के कुछ प्लसेस माइनसेस होते हैं. तो वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड पीपल आर रियली, आई शुडंट प्रेज माई सेल्फ, बट पीपल आर रियली हैप्पी विद अस. और हमें आपको एक और भी बात बता देता हूँ, आपकी कंपनी को टिप्स को प्रायोरिटी भी मिलती है कि चलो आप पहले ले लो, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर ये जो बैठे हैं, कल को मेरी 6 महीने के बाद भी मूवी रिलीज हुई या कुछ भी हुआ तो दे विल सपोर्ट मी, दे विल हेल्प मी. एंड हमारा जो ब्रांड है पिछले 25-30 साल से, देयर इज नो कंट्रोवर्सी एट ऑल. किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या कोई कुछ ऐसा इशू, नथिंग एट ऑल, all smooth. So that relationship really counts, and people are really, my industry is really happy with us. That's great. That's great. And secondly, sir, last year आपने बोला था कि now from 10 to 12 crores we will look to increase the content cost from 20 to 20-30 crores, right? But now आप एक क्वार्टर में एटलीस्ट 10 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं. So ऐसा कोई रेंज या बजट है आपके पास में कंटेंट के लिए कि आप साल में कितना स्पेंड करने का देख रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स मेरे माइंड में है, लेकिन मैंने आपको शायद 10 कुछ ऐसा बताया नहीं था. मे बी आपने कुछ ऐसा फिगर बोला हो तो मैंने कुछ जवाब न दिया हो. जब सर आपका फर्स्ट कॉन्कॉल और फर्स्ट प्रेजेंटेशन हुआ था तब आपने ये 10 to 12 से 18-20 करोड़ कुछ बोला था. ओके, शो हो सकता है मैंने कुछ बोला हो, ऐसा निकल गया हो या कुछ ऐसे तभी. लेकिन कहना वो लॉन्ग टर्म में वी कांट टेल यू फिगर्स बिकॉज इट्स कंपटीशन में होता है थोड़ा सा इशू. बट आई कैन अश्योर यू कि क्या होता है, कभी कभी आप एक कमिट कर, माना जैसे आपने सोचा कि आप ये करने वाले हो और आप थोड़ा ज्यादा जाते हो, तो यू सी कि आपका बिजनेस की ग्रोथ आपकी अच्छी हो रही है, एंड यू कैन स्टिल मेंटेन योर टॉप लाइन बॉटम लाइन. और आपको अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो क्या अभी जैसे मेरा ये क्वार्टर है, आप अज्यूम करो कि इसमें अगर एक आधा कंटेंट और भी ज्यादा आ जाता है तो भी हम तकलीफ नहीं थी, हम ले लेते और हम बना सब ठीक रहता. बॉटम लाइन स्टिल मेंटेन, बहुत अच्छा बॉटम लाइन है, बहुत अच्छा टॉप लाइन है. वी कुड हैव कैरिड दैट. लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती लेके कोई फायदा नहीं. राइट. लूज नहीं करना है, कोशिश यही पूरी है, फोकस यही है. वी आर हियर टू मेक मनी. ऐसा नहीं है कि अगर शेयर मार्केट में हमारा शेयर ऊपर जा रहा है या कुछ हो रहा है ऐसा तो हमें पागल हो जाना है. नहीं, वी आर वेरी ठीक है, दैट इज अ सेपरेट थिंग. वो जो भी होना होगा. अल्टीमेटली इट्स अ परफॉर्मेंस. अगर हमें परफॉर्मेंस ठीक किया तो सब ठीक रहेंगे. राइट. तो ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि इफ देयर इज गुड कंटेंट अवेलेबल you won't spare spending money. मतलब अगर 50 करोड़ भी स्पेंड करना रहा तो आप करेंगे? अभी तो नहीं करूंगा, एक साल के बाद. लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी वो पोजीशन हो जाएगी. मतलब आपका जितना कैपेबिलिटी रहेगी टिप्स एज अ कंपनी अपने साइज पे जो कैपेबिलिटी रहेगी आप स्पेंड करेंगे. एब्सोल्युटली. राइट. सर ये डीमर्जर पे जो सर डीमर्जर में अभी आपके पास जो कैश है वो म्यूजिक बिजनेस पे जाएगा कि फिल्म बिजनेस को आप कुछ कैश देने वाले हैं? नहीं, फिल्म बिजनेस को कैश देंगे. उसमें हमने ऑलरेडी स्कीम में लिख दिया है, पूरे सब डिटेल्स लिखे हैं. क्या फिल्म बिजनेस में जाएगा, क्या म्यूजिक कंपनी के पास रहेगा. यस ऑफ कोर्स वो पैसे तो देने पड़ेंगे. क्वांटिफाई कर सकते हैं फिल्म बिजनेस में कितना कैश देने वाले? मेरे ख्याल से क्वांटिफाइड है ऑलरेडी. मुझे नहीं मालूम है कि मैं वो. एक मिनट, चेलानी, कैन वी डू दैट? चेलानी, मैं CFO कैन रिस्पॉन्ड टू दिस. Okay, I'll take that separate. And lastly, sir, क्या आप अपने कंटेंट का स्प्लिट बता सकते हैं? Like you have said recently that 65% of our content is 90s, right? So 2000-2010 के बीच में कितना है और 2010 के बाद का कितना कंटेंट है परसेंटेज? मैंने बोला था 65% टिप्स का जो ओन है वो हमने जो मार्केट में रिलीज हुआ था उसका बोला था. उसके बाद तो हम रेलेवेंट नहीं थे, बट हमने उसके बाद भी जो भी कंटेंट बनाया है, वेदर इट इज रेस 1, 2, 3, अजब प्रेम की गजब कहानी, प्रिंस, किस्मत कनेक्शन, बटा पोस्टर निकला हीरो, जितने भी रमयावस्था हुई, जितनी पिक्चरों का हमने जितने पिक्चर्स खुद के बनाए या हमने बाहर से भी लिए 2-3, तो सबका कंटेंट बहुत अच्छा था. जैसे हमने रिसेंटली जीनियस एक छोटी पिक्चर ली थी हमने, वेरी नॉमिनल कॉस्ट हुई पे, एंड वो बहुत ही मैसिव हिट है. मैसिव माना कोई बड़ी पिक्चर का म्यूजिक होता तो पता नहीं कितने करोड़ का वो म्यूजिक होता. तो वी हैव एक्वायर्ड दैट जवानी जाने मन वन फिल्म. जैसे उसमें वी हैव रिक्रिएटेड आवर सॉन्ग ओले ओले. इट्स वेरी फेवरेट. हर टीवी चैनल पे वो चलता है.
So the thing that I was trying to understand is कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू आता है वो 90s के सॉन्ग से कितना परसेंटेज आता होगा, 2000 के सॉन्ग से कितना परसेंटेज आता होगा, 2010 के सॉन्ग के बाद से कितना परसेंटेज? हम आपसे 2-3 क्वार्टर के बाद हम शेयर करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे. Okay. Sorry, that was also. My phone went to the sleeping mode. Now I can tell you in terms of the percentage, nearly 40% will go to film and 60% will remain in the music. 40% of our cash will go to films. Whatever the cash was available in our balance sheet on the 31st March 2021, nearly 40% will go to film and 60% will remain with music business. That's right. Got it. That was very helpful. Thank you. Yeah. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in this conference, we request you to limit your questions to 2 per participant only. The next question is from the line of Akshay Sam from Sam Capital. Please go ahead. Hi sir. Sir, thanks for the follow-up. Sir, एक कमी थी मुझे लगती है हमारे कंपनी में कि 2000 से लेके 2020 तक हमारा कंटेंट है ना बहुत कम, ना के बराबर है, बहुत कम है, राइट? तो कई सारे कंपनीज अभी एक्विजिशन कर रही है, जैसे आपके जो कंपटीटर लिस्टेड है सारे काम, वो अभी एक बड़े तेलुगु लेबल को अक्वायर किया आज ही, मैंगो म्यूजिक, जो 1500 गाने. तो हमें मुझे भी लगता है हमें भी कुछ उस तरीके का कोई डील करना चाहिए टू ब्रिज द गैप, राइट? क्योंकि इस जो 20 साल में हमने जो भी वजह से कंटेंट एक्वायर नहीं किया, पायरेसी हो गया या रिटर्न नहीं मिलते थे, तो कोई स्ट्रैटेजी है माने इनऑर्गेनिक आपके तरफ से? तो रानी जी आप बता दें थोड़ा कि ये 20 साल का जो कंटेंट जो छोटा है, 90s में ठीक है हम लोग किंग थे, लेकिन जो 2000 से लेके 2020 का जो कंटेंट को उसको ब्रिज कैसे किया जाए, वो आप अगर कोई स्ट्रैटेजी हो. पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 2003-4 से लेके 2020 तक हम थे मार्केट में, टिप्स थी मार्केट में. टिप्स ने बहुत सारे पिक्चरें खुद के प्रोड्यूस किए हैं, कम से कम 20-25 पिक्चरें होंगे जो प्रोड्यूस किए हैं. उनका म्यूजिक पूरा हमने रिटेन किया था, और उसकी जो म्यूजिक थी, माना अगर कंपटीशन वाले 5 पिक्चर रिलीज कर रहे हैं तो हमारी एक पिक्चर का म्यूजिक की क्वालिटी उतनी उसके बराबर थे. नंबर 1. नंबर 2, जो भी हमने इवन जो इन द 2000 जब हम आईपीओ किए थे, हमने 12-15 लेबल लिए थे, 12 लेबल लिए थे, 12 लेबल लिए थे हमने. जैसे आज इन्होंने जो आपने बताया कि अभी कोई डील हुआ है, तो हमने भी 12 लेबल एक्वायर किए थे, जिसमें बहुत बड़े 2 हिंदी लेबल थे, टाइम म्यूजिक एंड जो भी गोल्ड कंपनी, गोल्ड थिएटर्स है उनके, शाह ब्रदर्स हैं, एंड एक वेस्टर्न कंपनी हुआ करती थी जो टीवी वो सब इलेक्ट्रॉनिक बनाते थे, विछानीस, उनका हमने लेबल लिया था. प्लस और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी हमने लेबल लिए थे, जो हमने कंटेंट एक्चुअली एक्सप्लॉइट नहीं किया था, बट हमने लास्ट 1-2 साल में उस पर भी पूरा टचअप किया है कि हम पूरा इसका कैटलॉग जो हिंदी एक्सप्लॉइट कर लिए थे, रीजनल हमने नहीं किया था कई कुछ उसमें, तो वो भी पूरा अपडेट हो रहा है. पिछले 1 साल से लगे हुए हैं. तो मास्टर्स हम ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब उनको रिफर्बिश करके हम लोग अपलोड कर रहे हैं. तो हम उस सिचुएशन में नहीं है. एंड क्या है ना, हमारा जो बिजनेस है ना, इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस. इट्स नॉट कि सडनली मैंने पैसे फेंके तो मुझे कुछ भी माल मिल जाए. तो आई एम वेरी केयरफुल एंड आई एम अ मिड साइज कंपनी. आई हैव टू सी माई सेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड मैं कैसे अपने आप को रिलेवेंट भी करूँ. और अगर आज मेरी सिचुएशन है तो मैं नंबर 5 पे हूँ, तो आई शुड टारगेट माई सेल्फ इन नेक्स्ट 1.5 years कि मैं नंबर 3 पे आ जाऊँ. तो दैट इज माई टारगेट. उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 25-30% मिनिमम ग्रोथ मैं देख रहा हूँ टॉप लाइन में, एंड बॉटम लाइन में 15-20% आई शुड मेंटेन. एंड कंटेंट पे जितना हो सकता है उतना मैं बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करे कंपनी में ले आ. फिर वेदर मुझे वो ओल्ड रेपेटोर कोई कंपनी मुझे एक्विजिशन के लिए मिलती है तो मैं वो करूँ, या अगर कोई मुझे न्यू रिलीज मिलती है तो मैं वो करूँ, या अगर समझो जैसे आप बोलते हो कि कोई पुरानी कंपनी कोई ऐसी आ गई, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आई एम ऑन. मैं म्यूजिक के लिए कभी मना नहीं करूंगा कि कोई अच्छी म्यूजिक होगी फिर ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास कैश भी है, कैश फ्लोज भी है, एंड वी कैन ऑल्सो रेज मनी. तो वो अभी लेकिन अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो खाली ऐसे पैसे लेके रख दो और इंटरेस्ट कमाओ तो वो भी ठीक नहीं है. वो आई डोंट लाइक दैट. कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसमें टाइम मिल जाता है सफिशिएंट, वी कैन मैनेज मनीज, कोई इश्यू नहीं है. तो हाँ है मतलब वो फोकस है कि
एक आपको एक अपने आप ही सोचना है जो आप रूटीन बिजनेस करते हो, हाउ यू अचीव नंबर 3 पोजीशन, एंड प्लस क्या आप कोई बड़ा काम कर सकते हो क्या, तो वो नजर है। अगर कुछ होगा ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो जरूर आप देखोगे कि हम भी हैं लाइन में। Okay, sir. Thanks. Thank you. The next question is from the line of Ravi Naredi from Naredi Investments. Please go ahead. Thank you, Kumar Tarani sir. You are giving excellent result quarter by quarter. Sir, how much percentage growth in your mind for our company for next 3 to 5 years for music industries? See, for music business, I really think if 25-30% is not a problem, and the top line and bottom line 15-20% also is not a problem. So I feel it's comfortably we will manage and maintain that. Very nice, sir. And this is my personal request, sir. Do please take date instead of raising equity for any content or anything you want to buy the company, and reward the shareholder by buybacking the share instead of dividend. That will enhance our equity in long run. Yeah, we do that. We already done that last year. We will do that. Yes, sir. And last thing, our margin is down in year to year and quarter to quarter. Anything specific reason? Because I joined the Concall late. That's why I'm asking you. Because of content acquisition, we have invested more money than the previous quarter or last year, and that is a part of our budget. But we are, if you see that 15-20% wala bracket or 30%, so we are maintaining that. So that's not, it's good for the company. The 25 to 30% of net profit we are buying content, right? No, not like that. 25 to 30% top line है, उसमें growth होगी year on year. If we did last year of 90 crore का top line, so this year our target should be 170. But now the way things are, I think we will cross that as well. So and bottom line में I think last year was 43. अगर उसमें अगर आप 20% भी जोड़ दो तो 8 crore और तो 51. So we have already, bottom line तो we have already achieved in 3 quarters. Right. So that's very good. And I think we have आप percentage में थोड़ा नहीं देखो, आप numbers में देखो, and उसके साथ ये देखो कि पैसा कहाँ गया, पैसा content acquire में गया, जो हमारा future भी ठीक करेगा. बिल्कुल ठीक करेगा. I am in that camp. That definitely it will enhance our earning in next few years. Thank you very much. Yeah. Keep it up. Thank you. The next question is from the line of Swacha Jain from ANS Wealth. Please go ahead. Hi, sir. Thank you for giving this opportunity and congrats on a good set of numbers. So I had 2 questions. One was, sir, if you could help us understand, your unit economics of paid subscribers versus ad-based subscribers on YouTube, sir. Active subscriber? No, सर अपना यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब अगर हमारे पेड सब्सक्राइबर है वर्सेस एड बेस्ड सब्सक्राइबर, तो हमारा रेवेन्यू मतलब हाउ मच डू वी मेक ऑन पर सॉन्ग बेसिस. अगर कोई पेड सब्सक्राइबर है तो उससे हमें रेवेन्यू कैसे मिलता है पर सॉन्ग, वर्सेस कोई एड बेस्ड सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे तो हमें पर स्ट्रीम में हमको कितना मिलता है सर. और स्ट्रीम बेसिस जो है इट्स चेंजिंग. पहले इट्स चेंजिंग फ्रॉम मंथ ऑन मंथ बेसिस कि कितने सब्सक्राइबर आए, उन्होंने कितनों को फ्री दिया. देयर इज अ वेरी वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज. बट आप ये समझ के चलो कि 7-8 पैसे से लेके 25-30 पैसे तक ये पैसे मिलते हैं लोगों को. बाकी आई कांट शेयर वो जो अपना जो आपने बताया कि कितना पेड है कितना, आई कांट शेयर एक्चुअल नंबर्स, बट आई कैन गिव दिस मोटा कि ये ऐसे हो रहा है. So you are saying मतलब 7 पैसे से 30 पैसा हमें अगर कोई एड बेस्ड सब्सक्राइबर है और वो अगर हमारे गाने सुनता है यूट्यूब पे, तो हमें पर स्ट्रीम 8 पैसा to 25-30 पैसा भी मिल सकता है. वो क्योंकि इसमें इंटरनेशनल भी आता है. इंटरनेशनल तो दे पीपल पे इन डॉलर्स एंड पाउंड्स एंड यूरोज, so we get more money there. Right. So और अगर कोई पेड सब्सक्राइबर है तो उसमें अपने को कैसे रेवेन्यू, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम की बात करी ना, ये तो पेड की बात करी ना.
उसमें भी तो डिपेंड करेगा ना, अगर उसने 99 रुपीज दिया, उसने 100 गाने सुने या 1000 गाने सुने, अगर 1000 गाना सुन लिया उसने तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, अगर 100 गाने सुने तो रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। ओके। सो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर पेड सब्सक्राइबर है, सपोज वो 100 रुपए का प्लान लेता है 1 महीने का, और उसने पूरे 1 महीने में सिर्फ टिप्स के गाने सुने हैं, तो ये 100 रुपीज जो सब्सक्राइबर दे रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज है, उसमें से कुछ डील है विथ यूट्यूब, उसमें से जो परसेंटेज टिप्स का फिक्स होगा वो टिप्स को आ जाएगा। ओके। जो भी 100 रुपया यूट्यूब लेगा उसमें से वो क्या करता है, ही विल क्रिएट अ म्यूजिक पूल। 1 मिनट के मान लीजिए कि उसने 50% म्यूजिक कंपनियों को सबको दे दिया। अब उसमें म्यूजिक कंपनी में किसके साथ वो डील करता है, 40% में, किसके साथ 45% में, किसके साथ 50% में, 55, वो उनके डील्स उनको मालूम है और हमको मालूम नहीं, मुझे मेरा डील मालूम है। राइट। म्यूजिक पूल में से जो उसने 50% निकाला उसमें से उसने सबको पैसे बांट दिए, जिसका कमिटमेंट था। अगर उसको कुछ बच गया तो वो वापस ले लेगा, अगर कम हो गया तो थोड़ा और डाल देगा। ओके, अंडरस्टूड। सो और फिर ये जो एड, जो फ्री सब्सक्राइबर्स होते हैं उस पे हमें कैसे मिलता है? दे हैव टू डू एड, सेम बेसिस है उसमें। एड आप जो एड देखते हो, जब आप एड देखते हो तो उसके पैसे आते हैं और वो पैसे कलेक्ट होते हैं, और जो टोटल पूल बना उसमें कितने एड्स में से पैसे आए और फिर कौन सी एड में कौन सा गाना चला, उसके हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं पैसे। ओके, कंपनी को चला जाएगा परसेंटेज। ओके, अंडरस्टूड। सर एक सेकंड क्वेश्चन था, एक क्लैरिफिकेशन था, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड सर, कंटेंट कॉस्ट अभी हम जो स्पेंड कर रहे हैं, डू वी रिकवर दैट इन 1 ईयर? मतलब मैंने शायद ऐसा कुछ सुना, तो जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट कि हमारा कंटेंट कॉस्ट कितने साल में रिकवर हो रहा है? नहीं, कंटेंट कॉस्ट रिकवर, जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का बोल रहा है, इट इज रिकवरिंग इन 2.5 years, एंड बट हम टिप्स कंपनी हम सेम ईयर राइट ऑफ कर देते हैं। हाँ, राइट। हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए वो लायबिलिटी नहीं है, हम अपने सेम ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं। अंडरस्टूड। Your line has some disturbance. Okay. Sir, am I better now? Yeah, better now, yeah. Sir, एक last question है, can I just ask? Yeah. सर, जो हम कंटेंट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो उसमें सर आर वी थिंकिंग कि हम सिर्फ रीजनल में ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और रीजनल में भी इज एनी पर्टिकुलर जॉनरे दैट वी आर टारगेटिंग, लाइक जस्ट तमिल और तेलुगु और पंजाबी, ऐसा कुछ आप कुछ गाइड कर सकते हैं सर? नहीं, मैं तो कंटेंट पे सोच रहा हूँ कि कोई भी अच्छा कंटेंट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, आई एम ओके विद दैट। आई हैव नो फैंसी कि मैं इसमें करूँगा, ये नहीं करूँगा। कंटेंट इज कंटेंट। Okay. Got it, sir. Thank you so much, sir. Thank you. We'll move on to the next question. That is on the line, Sarbit Shahpuri from Midara Capital. Please go ahead. Hi sir, I have 2 questions. One, ये क्वार्टर आपको लगता है आपने मार्केट शेयर गेन किया होगा? मार्केट शेयर, हाँ, मार्केट शेयर तो गेन कर रहे हैं, करना ही है, क्योंकि अगर 25 तक का 30 तक का इंडस्ट्री ग्रो हुआ है, आप इफ यू हैव ग्रोन 40%, यू वुड हैव गेन मार्केट शेयर, राइट? हाँ, मार्केट शेयर गेन करेंगे, यस, बिकॉज अगर टारगेट है कि नंबर 3 पे आना है तो वी हैव टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, में तभी तो हम ऊपर आएंगे। तो लगता है आपको ये क्वार्टर हुआ है थोड़ा सर? हाँ, थोड़ा हुआ होगा, यस। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप बोल रहे हैं कि आपको 15-20 तक आप बॉटम लाइन दिखाना है to as you are growing top line. Yeah. Why not expense and get more content? Why do you care about that? Actually, that's the right thing you have suggested. And वो मैंने ये I think I clarified this point कि मैं content छोड़ूंगा नहीं, मतलब आप ये please rest assured, content नहीं छोड़ूंगा, but content छोड़ने के बावजूद भी my target should be 15 से 20 तक मैं maintain करूँ। But अगर एक आधा साल ऐसा कुछ हो गया, so that's a different thing. Then I'll explain all of you why this has happened. No, my question to you is, sir, why pay tax if you can buy content and expense? Who cares? ये बात भी सही है, तो नहीं, बट क्या ना, प्लीज अंडरस्टैंड कितना मेरा my thinking is कि कंटेंट भी अच्छा मिलना चाहिए ना, कितना कंटेंट अच्छा आता है। That, but I think मतलब 15-20 तक आप टारगेट बोल रहे हो, मतलब उससे फायदा क्या है? As a shareholder, I am happy if you grow top line. वो तो कैश प्रॉफिट तो बाद में आने वाला है ना। हाँ, you are right, absolutely. You are
first person, you have touched the main point. Yes, you are absolutely right. So my point is, are you thinking from the point of view that अगर पैक नहीं आया तो will it impact share price or I don't know, ऐसी कुछ सोचे आप? मैंने तो अरे few minutes back आप 5 साल से राइट ऑफ ही कर रहे हैं ना सर? नहीं, मैं तो आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि I am not thinking about my share price. Our share price is a different thing altogether. I have to find content. My recommendation, suggestion, and hope to you expense. So who cares? I mean, as long as top line comes 30-40%. Yes, I agree with you. We'll keep this in mind, and it's already in my mind as well. ऐसा नहीं कि नहीं है. But see how अभी at present whatever content I'm getting, I'm buying, and I have a huge targets and touch wood. हमारे जो projections है, it's very good, seems very good, and we have also according to that जो मैंने आपको बताया 25-30 अगर हम grow करते हैं 15-20 maintain करते हैं तो we have lot of cash in our hands. तो lot of cash है तो वो content में जाएगा. अब उसके beyond after spending that kind of money, huge money, उसके beyond कुछ opportunity है तो we'll see. We'll definitely look at that. Fair enough, sir. Okay. And sir, आपको पता है, do you have any idea on when the shares of the movies might get listed? I think we are targeting कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं. मेरी जो टीम है जो वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर कि मार्च के पहले हो जाए. But they have given me कि मार्च या अप्रैल में हो जाएगा. And on that company, sir, उसके लिए भी आप अलग से कॉल करोगे? Yes, करेंगे ना. एक दो क्वार्टर के बाद करेंगे. समझ गया. You will inform us कि क्या हो रहा है उसमें. Yes, absolutely. Why not? वो हमारा उसके लिए भी है कुछ अच्छे plans हैं. We'll think एक बार हो जाएगा बात करेंगे. That's all from me, sir. Thank you so much. Thank you. The next question is from the line of Saket Mehrotra from Tusk Investments. Please go ahead. Yeah, hi. Thanks for bringing me on. Tarani, just a simple request, continuing on to what some of these previous participants mentioned. Would request you to, I mean, I'm sure you have a existing dividend payout policy. In case you want to reward, buybacks are there, and obviously आप भी इतना bullish हो इस space में, we would much rather want you to spend this money in buying content than, paying us back in a tax inefficient manner. So would request you to keep that in mind and, kindly take our suggestions on that. Yeah, Saket. First option is that only. कि content मिला है maximum आप you won't believe जब हमने ये company start की थी, trust me, we have not made our houses, we didn't bought any cars, we didn't even had a factory जहाँ पर कैसेट बनेंगे. We invested all the money, जो भी हम लोन जहाँ से भी कुछ भी मिल सकता था, पैसे लो, content खरीदो. We did that for many years. After that we got settled. ठीक है, चलो अभी थोड़ा वो ठीक करते हैं अपने आप को. लेकिन our focus is even now also our focus is the content, good content. Let's create a good content. 90% of our time goes in that. Great. Thank you so much, and just wanted to sound it off just in line with what the previous participant said. Yeah. So that's it from my side. Yeah, very nice. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, in the interest of time, that was our last question. For any other questions, you can get in touch with Orient Capital. I now hand the conference over to Mr. Kumar Tarani for his closing comments. Thank you so much, shareholders, and please keep supporting us like this. And we maintain what we commit, and I'll make sure we achieve those results. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Tips Industries, that concludes this conference call. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.